Hello, welcome to my YouTube channel. This is Vivan. You're watching Vivan Live, and in today's video of Off the Charts, we're gonna talk about what's happening with Bitcoin, what happened to our previous trade, how profitable we are in the month of June. I will also be showing my own trading account. So I've created a new account in which I'm gonna trade, and all of those trades would be publicly available on probably a Google Sheet, which would be linked down in the description. You could also see what kind of risk management that I'm taking and how I am planning to grow that account. So this $1,000 that I'm depositing on KuCoin, if I lose that money, it won't harm me. So I'm trading with only that amount with which I can afford to lose. So let's just get started. So what's happening? Bitcoin is at 27,300, and let's just open Telegram. On Telegram, you could see that I told you that I'm taking a short trade here, and बस थोड़ी देर में TP भी हिट हो गया था. उसके बाद कोई अपडेट्स नहीं आए हैं. क्यों नहीं आए? Because only 24 people have joined the Telegram group, and if I don't see a lot of engagement, it doesn't make sense for me to update on Telegram whenever I'm taking a trade, right? So please, if you want to see and learn, do join the Telegram group. For now, let's just delete all this क्योंकि अपना काम हो गया है. So what are we going to do now? क्या हम लॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जनरली लॉन्ग करने के लिए कुछ अच्छे चीज़ें दिखनी चाहिए जो मुझे अभी दिख नहीं रही है. कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आता जा रहा है. सो व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हियर? देयर फ्यू पॉसिबिलिटीज. बिटकॉइन इसी रेंज में घूमेगा एंड यहाँ से यहाँ पे ब्रेकआउट देके इस बॉक्स को टेस्ट करेगा एंड वापस नीचे आ जाएगा. और एल्स इस बॉक्स को अगर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा एंड वापस नीचे आएगा. तब तक ये जो 200 मूविंग एवरेज है वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा. सो दैट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. तो दिस इज समथिंग विच कैन हैपन. जनरली मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ. आई वेट फॉर अ शॉर्ट ट्रेड. शॉर्ट ट्रेड मैं कहाँ करूँगा? अगर वैसे टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा. आई टेक अ शॉर्ट हियर और हियर. ठीक है, अभी मैं शॉर्ट नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ से तुरंत पंप भी आ सकता है. हमारे सपोर्ट लेवल्स क्या हैं? हमारे सपोर्ट लेवल्स है 25,412 एंड वी हैव अनदर सपोर्ट एट अराउंड 19,000 रीजन, 19 to 20,000 रीजन. अगर बिटकॉइन यहाँ तक आता है देन वी कैन टेक अ वेरी नाइस स्पॉट ट्रेड प्लस फ्यूचर्स ट्रेड हियर बिकॉज दैट इज द लास्ट स्टॉप ऑफ आवर 2017 साइकिल. सो जब भी लास्ट स्टॉप टेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है वहाँ पे एंड साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट होगा क्योंकि 20,000 का बिटकॉइन आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बाय करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद बिटकॉइन डोमिनेंस. सो बिटकॉइन डोमिनेंस BTC.D डेली टाइम फ्रेम. कम हियर यू सी इट्स 48.36. ये आपको कब मिला था? यहाँ पे आपको 30 जुलाई 2021 में मिला था. सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 ईयर के हाई पे आ गया है. दैट मीन्स ऑल कॉइन्स आर गोना ब्लीड, राइट? हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि इफ़ यू थिंक दैट यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ शिट कॉइन्स, जब थोड़ी डोमिनेंस नीचे आ गई थी देन यू कुड हैव सोल्ड ऑफ और प्रॉब्ली जस्ट कन्वर्ट दैट शिट कॉइन इनटू BTC एंड hodl. That's what I do, right? BTC dominance going up is not a good sign. A good sign for alts, it's not a good sign. So if you're planning to invest in altcoins, do not invest in altcoins unless you want to average out your position and you want to hodl that altcoin for the next 4-5 years based on its fundamentals. And even if you want to average it out, make sure that you are averaging after every like 30-40%, right? क्योंकि 5-5, 10-10% के डिप पे आप मत खरीदो. ऑल्ट कॉइन्स जनरली 90% डिप होते हैं. 90% डिप होते हैं मार्केट के टॉप से. बिटकॉइन 83 to 85% डिप होते हैं. सो 90% अगर डिप हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने अच्छे से आप एवरेज आउट कर सकते हो, राइट? सो बट ओनली एवरेज आउट इफ़ यू आर गोना हॉडल दैट क्रिप्टो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट और नीचे जाए और तुम्हें लगे नहीं और नीचे जाएगा तो मैं अभी बेच देता हूँ, बाद में खरीदूंगा. वो बाद में कभी नहीं आएगा, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग वाइज डिसीजंस व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स. Talking about Matic is at 51 cents. Think for me it might be a good buy क्योंकि मेरा एवरेज थोड़ा गंदा है तो मैं शायद थोड़ा बाय कर लूँ. So I was about to buy after this wedge breaks. We're almost 50 सेंट्स पे मैं बाय कर सकता हूँ. सेकंड में बाय करूँगा 33 सेंट्स पे अगर आता है एंड देन 25 सेंट्स पे. इसके नीचे अगर जाता है तो मैं कुछ बाय नहीं करूँगा.
So that's pretty much it about what I'm gonna do with Matic. Now let's come to this KuCoin $1000 account sheet. इसको मैं भर के मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, so टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना. Let's just go through our PNL history from June 1st to June 12th, right? From June 1st to June 12th, we have taken almost 9 trades, out of which 7 of them have been profitable. Profit सारा मिला दिया तो $1146 होता है. Loss अगर सब मिला दिया तो $108 होता है. So approximately in the last in the last 2 weeks, in the last 12 days, we have made a profit of $1,000, which is not at all bad. And this account, I'm not gonna fund anything more in this account. Every profit that I make here would definitely be added on this Google sheet. बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा मेरे लिए, but I'll try to do that. This is basically a trading portfolio. This is not my complete portfolio. This is just so that you guys can learn from my mistakes. Do not follow me. Just see what I'm doing, and if you want to learn from my mistakes, you're welcomed. You'll just try and get a feel of it ki, how is it to trade and how is it to grow a small account to a big account. Small account as in $1,000 account to a $5,000 account or $10,000 account. I'm gonna document all of that on this channel, so please make sure that you're hitting like, subscribe and comment down below if you're liking it. If I get a lot of good traction from this video, I'll definitely continue this, or else it doesn't make sense showing all that I'm doing and documenting it, because all of this takes a lot of time, right? So that's pretty much it from this video. This is Vivan signing off. Do not forget to hit subscribe. Also bell icon bhi daba dena. Instagram pe jaake stalk karna, Telegram pe jaake join karna, and do all the good things that you could do, and I'll keep on making more content for you. So I'll see you next time. Bye.